Good morning everyone. Very welcome to babycode free PTE sessions. I'm Tanu Virmani, a PTE certified trainer and a TEFL TESOL certified trainer. So I'm back with my live session number 9. हमने लास्ट टॉपिक में अपना ऐसे टॉपिक किया था लास्ट सेशन में. वी डिस्कस अबाउट एसेस की एसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं और कैसे आपको आंसर लिखना है उसमें. सो टुडे इज पार्ट 2. हमने 3 टाइप्स ऑफ ऐसे करे थे. एग्री, डिसएग्री, ओपिनियन बेस्ड ऐसे, डिस्कशन ऐसे. बेसिकली जो ओपिनियन ऐसेज होते हैं हमने वो डिस्कस करे थे. टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अनदर 3 टाइप्स ऑफ ऐसे. So in the last session also I discussed about कि ऐसे क्या होता है, how to write an essay, कैसे आपको ऐसे लिखना है, राइट. आपकी कौन सी स्किल्स यहाँ पे इवैल्यूएट होती है. 200 to 300 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना होता है, नो मोर देन 300 से ज्यादा आपको नहीं लिखना. 20 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है टू राइट एन ऐसे. दिस विल बी योर स्क्रीन. आपकी स्क्रीन ऐसे दिखती है. नाउ दिस विल बी योर स्क्रीन, राइट. टाइप्स ऑफ ऐसे में हमने ऑलरेडी 2 टाइप्स डिस्कस कर लिए. ओपिनियन ऐसे जो एग्री एंड डिसएग्री हो या ओपिनियन हो, एंड डिस्कशन ऐसे दैट मींस डिस्कस बोथ व्यूज. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे, एंड डबल क्वेश्चन ऐसे. आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं. मार्किंग क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस करा था लास्ट सेशन में कि आपकी मार्किंग किस अकॉर्डिंग होती है, कंटेंट के बेसिस पे कि आपका रिस्पांस जो है वो रेलेवेंट है कि नहीं है, इररेलेवेंट तो नहीं है, स्पेलिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, राइट. देन नेक्स्ट थिंग इज आपकी राइटिंग स्किल्स, आपको क्या क्या चाहिए, आंसर आपको कैसे करना है. आपके पास कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी होता है इन दिस कंप्यूटराइज्ड टेस्ट. स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस करी थी कि आपको सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को, प्रॉम्प्ट को केयरफुली रीड करो, आइडेंटिफाई करो अपने फोकस ऑफ द क्वेश्चन को, पॉइंट ऑफ व्यू चेक करो कि क्या है आपका, टॉपिक को राइट करो, और ऐसे विल बी स्कोर्ड 0 अगर आपने अकॉर्डिंग टू द टॉपिक नहीं लिखा तो. थिंक ऑफ वन स्ट्रॉन्ग सेंटेंस जिसको आप मेन आर्ग्यूमेंट की तरह सम अप कर पाओ. आइडियाज, ओपनिंग स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन, ऐसे स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था. So same ways we'll be going here. So let's see what is the question format for advantage and disadvantage. ऐसे आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होता है. आपको एक स्टेटमेंट मिलता है एंड along with the statement आपको एक क्वेश्चन मिलता है, what are the advantages and disadvantages for this trend, कि इसकी एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है. या फिर आपका क्वेश्चन होता है कि डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, कि आउटवे मींस विच इज मोर हेवियर, किसका वेट ज्यादा है, एडवांटेजेस ज्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज्यादा है. सो अगेन यू हैव टू राइट इट. थर्ड थिंग इज कि आपके पास ऑप्शन आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, गिव योर ओपिनियन. यू वांट what are the advantages and disadvantages and give your opinion. तो यहाँ पे आपको advantages भी लिखनी है, disadvantage भी लिखनी है, and then you have to write your opinion. आपको अपना opinion भी लिखना है. So there are 3 formats. Problem and solution के लिए the first one is simply आपको आता है what are the problems of this and how can these problems be addressed. इनको address कैसे किया जाएगा, right? Second is what are the causes of this problem. कॉजेस क्या है इस प्रॉब्लम के. व्हाट सॉल्यूशन कैन बी प्रोवाइडेड टू सॉल्व दिस इशू, क्या सॉल्यूशन हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं. व्हाट सॉल्यूशंस कैन बी प्रोवाइडेड टू सॉल्व दिस इशू, इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं. व्हाट आर द इफेक्ट्स, इफेक्ट्स क्या है इसके. व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन एज सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और कौन कौन से मेजर्स आप एज अ सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए प्रोवाइड कर सकते हो, इसके इफेक्ट्स क्या है. तो 3 टाइप्स में आपको प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है. डबल क्वेश्चन ऐसे, डबल क्वेश्चन मींस 2 पार्ट क्वेश्चन ऐसे होता है. इसमें बेसिकली आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट होती है, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग लाइफ, है ना. क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फैक्टर्स
that can be considered. कौन से factors consider कर सकते हो आप? What is the definition of the same? What other rules can be imposed? Which is the best method? Why people consider in this way? So ये क्या है? Double question essay, right? So let's look at the format. अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपको स्ट्रक्चर कैसे लिखना है आइडिया बेस्ड ऐसे का. फर्स्ट वन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के केस में सबसे पहले कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन बॉडी पैरा 1, देन बॉडी पैरा 2 एंड देन योर कंक्लूजन. आपको कंक्लूजन लिखना है. तो जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन को लिखते टाइम आपको सबसे पहली स्टेटमेंट लिखनी है जनरल आइडिया. देन कम्स योर पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट, देन ओपिनियन इफ आस्क्ड. अगर ओपिनियन पूछा जाएगा तब आप अपना ओपिनियन लिखोगे, अदरवाइज यू विल राइट द रीजन हियर. बॉडी पैरा 1 में आप प्रेजेंट करोगे एडवांटेजेस को, एक्सपैंड करोगे विद द आइडियाज विद एन एग्जांपल. एग्जांपल के साथ आप क्या करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे. बॉडी पैरा 2 में आप प्रेजेंट करोगे डिसएडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करोगे विद एन एग्जांपल. Then comes your conclusion paragraph. In conclusion, you have to summarize the key feature. यहाँ पे आपको क्या करना है, sum up करना है अपने key features को, what you have already written about, right? So advantage और disadvantage का structure है clearly mentioned है, please go through it. Second is problem and solution question. First, introduction में you have to write a general idea, paraphrasing, then the major problem and the major solution. वन लाइन स्टेटमेंट में आप मेजर प्रॉब्लम को और मेजर सॉल्यूशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे. बॉडी पैरा 1 में आप प्रॉब्लम या कॉजेस जो भी आपसे पूछे गए हैं या इफेक्ट्स वो आपको लिखने हैं. बॉडी पैरा 2 में आप सॉल्यूशंस को लिखोगे, राइट? सो बॉडी पैरा 2 में आपका क्या आएगा, सॉल्यूशंस. यू विल राइट अबाउट सॉल्यूशंस हियर. इफेक्ट्स है जो भी उसको आप यहाँ पे लिखने वाले हो, राइट? देन कंक्लूजन मींस समराइजिंग द की फीचर्स. नेक्स्ट कम योर डबल क्वेश्चन ऐसे. डबल क्वेश्चन ऐसे में अगेन सबसे पहले आपको जनरल स्टेटमेंट लिखनी है, पैराफ्रेजिंग, एंड देन ब्रीफ आंसर टू द बोथ क्वेश्चन, बिकॉज डबल क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो प्रेजेंट द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यू विल बी राइटिंग इन द बॉडी पैरा 1. बॉडी पैरा 2 यू विल बी प्रेजेंटिंग द सेकेंड आंसर. ठीक है, सेकेंड आंसर दैट मीन्स सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यू विल राइट. And then comes your fourth paragraph conclusion where you have to summarize your key features. I hope the structure is clear now. If you have any doubts, you can just refer to the structure again. Next, now what are the example questions? There are the example questions on my screen. If you have advantage or disadvantage, so what sort of question you will get? In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move to regional areas outside the big cities. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantage? Now, what they are saying is that some countries, governments are encouraging industries and businesses so that they can move to regional areas outside the big cities. Now, what do you believe? The advantages are more or the disadvantages are more? If you believe that advantages are more, you will be writing more advantages and less disadvantage, because this is a question for outweigh situation. If you believe that disadvantages are more and advantages are less, so you will be writing less advantages and more disadvantages. Second question, what are the causes and give solution? Now, causes and give solution question, that means a kind of problem and solution. Despite improvements in vehicle technology, there are still large number of roads accidents. Explain some of the causes of these accidents and suggest some measures that could be taken to address the problem. So despite improvement in vehicle technology, there are large number of road accidents. What are the causes of these accidents? So they are asking you the number of causes. So you will be writing the causes in the body para 1 and you will suggest some solutions for these accidents in the paragraph 2. That means some measures. Two-part question essay. Many people around the world are choosing to move to live in cities. Question number 1, what problem do people experience in big cities? This is the first question. You will answer this first question in body para 1. Should governments encourage people to move to smaller towns? This is
Body para 2. This is the second question, so you will be answering in the second part. Now let's have an example, the sample answer for advantages and disadvantages. In some countries, private cars are now banned for certain city centers. What are the advantages and disadvantages of such system? How do you feel that this is something that most cities should adopt? So they're asking a little opinion here, right? That what do you think that cities should adopt or not? So first paragraph, you will be beginning with the general statement that banning car from city center is a recent trend and it can be seen in various cities around the world. Certain advantages and disadvantages immediately spring to mind when considering this step that cities councils are taking. Now, this first body paragraph, the advantages are clear. This is your body para 1 talking about advantage. There are critics, though, to the scheme of banning car in city center. This para discuss about disadvantages. And the last one is your conclusion paragraph. The structure is almost clear to everybody, I guess. Any doubts, please drop your comments in the comment section later on so that I can know that yes, you people are understanding. Okay, so please go through the sample answer. I'm giving you a few minutes. Advantages are very clearly mentioned in the body paragraph 1 and disadvantages also. Now let's move toward to the problem and solution essay. It is a fact that majority of people who are sent to prison commit further crime after their release. So ये माना जाता है कि बहुत सारे लोग, majority of people जो prison में जाते हैं, that means who got arrested, they commit crime. वो crime करते हैं release होने के बाद. What is this causing? What is causing this? And what can be done to change this? तो इसका cause क्या है? और आप इसको change कैसे कर सकते हो? That means what solutions you can provide. So firstly, you will write introduction according to general statement, paraphrasing, and a reason and a solution. So there are various reasons for this, but there are some things that can be done to prevent it from happening. So problem, one reason for this is recidivism due to lack of legitimate income. So reasons are here, problems are here, can find and causes are basically here alternative to earn money. When such person comes out of prison, it is very often the case that they have the few opportunities. In fact, these opportunities will even reduce. This is not a great environment for rehabilitation. Sometimes even a network of contacts can be made to help develop criminal activities on release. Then body para 2, one important way to help address this problem is education. उनको educate करना. Criminals who have turned to illegal activities because of no alternative to earn a living need to learn a way to earn a wage, right? So this paragraph talk about some changes. Last is your conclusion paragraph where you have to sum up. So please go through the passage one more time, look at the vocabulary and the sentence formation as well.
Okay, now let's move toward to the next question. Double question essay. Many people nowadays travel abroad for the university education. Why do people do this? क्यों लोग ऐसे करते हैं? Why you consider doing this yourself and why? So there are two questions and one statement कि क्यों लोग आजकल travel कर रहे हैं abroad university की education के लिए? Why do people do this? You will be answering this in the first body paragraph. Would you consider doing this yourself? Second body paragraph. Why? Third body paragraph you can create. So first is the introduction paragraph. Make a paraphrasing, write a general statement, and then start with your body paragraph one, that why people do, because they may be confronted with the foreign customs, traditions, they are experiencing and understanding their customs, their origins, and they get chances also to develop a more open-minded attitude towards others, and they also stimulate to learn about the reason behind certain traditions and practices. Prime reason for students studying abroad is maybe they are finding oneself and growing as an individual. When living in a foreign country, students become increasingly independent and they are confronted with their strength and weakness, right? When living in a foreign country, they are exposed to new languages also. Most cases attempt to learn. They already possess some knowledge and language also. So there will be advancing and improving of such skills, right? So they will be having higher chances of getting the job also, the international job market also. So please read the sample answer. Now let's have a look at the template. This is a template for problem and solution essay. You can save it with yourself and try practicing the essay writing with this. Like for introduction, it is certainly true that. So you can start with the statement. After providing careful analysis on how or why the problem has risen so sharply, I suggest a number of ways to tackle the problem. So you can start your body paragraph, one of the worst or social environment ever, first main reason to support it. Body paragraph, however, this problem can be looked after well by several precautionary measures, right? And then your conclusion, right? So just use this template. I won't say that apply only this. You can make your own also. But yes, this is a kind of a reference for you. Then a template for advantage and disadvantages. So this is for advantage and disadvantage. See the connectors, how they are used.
Once done, try practicing for the essay writing now. Please write it within 20 minutes. 20 minutes में write करो. Do it on a computer base. Type करो. Cut copy paste का use करो so that you won't be facing any difficulty in the exam, right? So keep learning, keep practicing. Do visit the babycode app. Watch out our sessions on the YouTube, even on the app. Stay tuned for tips and strategies. We have covered the speaking and writing module. In the next session, I'm going to start with the next module. So stay tuned. Thank you so much. Bye bye. Take care, all of you.